welcome to the day 2 of our machine learning and artificial intelligence workshop. So today we will be starting with data analysis. And first of all, before diving into the data analysis part, we need the tools for it, right? And one of the tool, the most important tool I should say, is your NumPy library. It's an open source library, and it has a building for the Python language, as we are coding in with Python, right? So we need that library. So for that we have to install that library, as it is a open source and it doesn't come with your inbuilt as an inbuilt function of Python. So what to do, how to approach this? So we have already installed Anaconda in our day 1 track. So let's go to a search option here, and let's type Anaconda. So you will see there are two options here. First is Anaconda prompt, and the second one is Anaconda navigator. When you click on that Anaconda navigator, a nice user interface will open for you. But when you click on this prompt option, a similar to कमांड लाइन, हमारे पास जो विंडोज का कमांड लाइन या टर्मिनल होता है, सेम एनाकोंडा का भी खुद का एक प्रॉम्प्ट होता है, and this nice looking prompt will open to you. So what to do? After that, you have to type pip. It's a pip package, that is Python installing package, installer package. This will come in built. So आपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में आया है 3.8 वर्जन, जो कि लेटेस्ट है. So उसके साथ में आपके पास में ये PIP ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके आता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट PIP यू विल बी इंस्टॉलिंग योर NumPy एंड द pandas लाइब्रेरी, जो हम लोग NumPy के जस्ट बाद, ये वन ऑफ द आई शुड से द सेकंड टूल यू विल बी नीडिंग फॉर द एनालिसिस ऑफ द data. So let's start installing. So after pip, you will write pip install numpy. So once you have to click on that numpy and just enter it. So right now I will be getting a message like requirement satisfied, already satisfied, as I have already installed this NumPy package with it is there in my system. So but for you it will take some uh, it will take some time, and also just make sure that you have a good internet while installing any packages as we move further. Okay, because in the upcoming days we will be installing many of the libraries such as matplotlib for visualization as a plotting library, then the scikit-learn, which will give us the packages containing all the algorithms which we will be learning, right? So just make sure while installing that you have a nice connection of internet. After that, right now, the NumPy library is already there in my system. Now we again need one more tool, that is your pandas library. So for that we again have to install it. It doesn't come with the Python, so what you have to do is pip install pandas and just enter over it, and again I will be getting some requirement already satisfied option, and I can see here this is my latest version that I have of pandas, right? So also in NumPy I have this 1.19.1 version, which is the latest version of NumPy. So in this way you have to install all these open source libraries, and just click exit after installing the required packages and libraries. So this was the first thing that you need to do before diving into the what and getting to know what are the arrays, what are the NumPy arrays. Why we don't prefer Python also has a array thing, but it doesn't have the data type as objects. Data types array objects. हम लोगों ने list देखा, list was also an object. हम लोगों ने tuple देखा, tuple भी एक Python object था. These are all collections, right? Arrays are also the collection of unique elements. So it should be there somewhere in the Python, but it is not an object.
एरे ऑब्जेक्ट करके पाइथन में कोई चीज आपके लिए अवेलेबल नहीं होती है। आप लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ लिस्ट जो होते हैं आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ numpy, एज अ एरे। सो बेसिकली इस तरह से कोई स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी नीड दिस ओपन सोर्स लाइब्रेरी। उसमें भी जो आपके 1D एरेज होते हैं, दे आर समटाइम्स आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। जो 2D एरेज होते हैं वो हमारे मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं विथ सम रोज एंड कॉलम्स, बिकॉज दे हैव रोज एंड कॉलम्स। एंड देयर आर 3 dimension, 4 dimension, 5 dimensional arrays. With NumPy, you can make any dimension of arrays, any dimensional arrays. So we will restrict ourselves to the making of 3 dimensional arrays, and how to pull or index the values, how to take the subset out of the given array, and so on. So in 3D arrays, it means it has 3 axes. See, when I say 1 dimensional array, it means the 1 dimensional array means it has only one axis, that there is only one way to do things. If I say, you can see here, this is how a 1 dimensional array looks like. We have some values. Those values are written along from left to right, just like what we saw earlier in the list, right? 7, then 2, then 9, and then 10. But if I say that let's multiply each and every value with 2, each and every value of this 1 dimension with 2. So there is only one way to do it, that from starting from left side, you can just multiply 7 by multiply 2 one by one with each and every element. So there is only one way starting from the left side. That's what this line, straight line, is showing, that you have only one option, one way, axis 0. Along this axis 0, you can perform any kind of operations, right? So what about this 2D arrays? Again, they are saying 2 dimensional. That means you have two axes, two ways, two approaches to multiply. Again the same thing, we want to multiply 2 to each and every element of this array. हम लोगों को इस 2 dimensional array, you can see it has 2 rows and 3 columns, a very nice 2D array. I want to just multiply or double each and every element of this array. I can approach this problem in 2 ways. Let's take this whole first row and start multiplying this 5.2, then 3.0, and 4.5 by 2. Okay, then let's come to the second row and multiply 9.1.1 and zero point 0.3 with 2. So this is my first approach. What is the second approach? I can take 5.2 and 9.1, multiply them both of them with 2, 5.2 into 2, 9.1 into 2. Then just shift over to the second column, 3.2 and zero point 0.1. Again, I will multiply these two with 2, and 4.5 and zero point 0.3. Again, I will multiply them with 2. So I can approach the doubling operation, doubling of the elements, in 2 ways. I can take rows, 1 row, 2 row, and approach. First, let's take 1 row, apply, multiply 2 to all the elements, then take the second row, or I can take the first column and do the multiplication, then take the second column, do the multiplication, and so on. So I have two options. That's what that axis 1 and 0 are for. So if I want to do, let's say अगर मुझे सिर्फ पहली रो के अंदर अभी मल्टीप्लाई करना है, so I will be using this axis 0. अगर मुझे इस पहले कॉलम को अप्रोच करना है एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज विद 2, तो मैं एक्सेस 1 को यूज करूंगी. सो अगेन यू हैव टू ऑप्शन इन 3 dimensional array. You have 3 axes to it means you have 3 options to approach this problem. 3 dimension means I can go to the first channel. 3 dimensional arrays are the bunch of channels, or you can say bunch of matrix stacked over each other. Okay, so this is my first matrix, and behind that there is another matrix, or you can just think of a glass lab that we saw in our physics lab. So
upper layer is your first matrix and bottom layer is your second matrix. They are staked over one another, so it's a three dimension. And this is the depth, it's a thickness. So this is how a three dimensional look like. And you have three ways to approach the problem of multiplying 2 to each and every element. So that's what that 3, 2 and 1 stands for. You can access 3 axes and just use any one of the axes to solve your problem, right? So this was a general idea behind what are the 3D, 2D and 1D arrays, right? Now through Python, we have this list. We learned about list. You can use now how to use this NumPy array that we have installed. First, after installing, your work is not done yet. You just have installed that package. Now you want to use it. So first of all, you have to import it. So how you will import? You will just open your notebook and उसके बाद में first line में आप लिखोगे import numpy as np. So as np, this np is basically alias. Instead of always using numpy, this whole big word, we will be calling the numpy library as np. So it's a more of a short name for us and easy to use. So after installing, if we want to use the numpy library or any other library in future, we have to import those libraries. So import numpy as np and we'll run this. So it will take some time according to your PC's performance. So import numpy as np. Now the numpy library. Now we will call the numpy library as np. So np numpy library is ready to use. So let's say we have this list L equals to 1, 2, 3. हमारे पास एक list है. We want to convert this list to an array. So how we should do it? Let's run this and take some more cells. np.array. So numpy package has a array function through which you can make any sequence. You can turn any sequence, Python sequences, Python objects to the numpy arrays. So how you will do it? Just send your list here and just run it. So now your array has converted to a numpy array. You want to check, let's save this or assign this array to arr object, arr variable. Now let's see, let's print this arr. You can see here it's a array. We want to check the type of it. Type of arr is like this. So basically it's a numpy based n dimensional array object. So it's a ND array object and you have created it using what? Using the NumPy library. This is what this type thing stands for. So this is what this output shows, right? So you have created your very first NumPy arrays. Now this is, I'm saying that it is a one dimensional array. How come I'm saying it? So the easiest way to approach or to check what dimension this array is, what are the dimension of these arrays. So first quick way is to see how many square bracket are there और अब कितने square bracket open हुए हैं. So I can see only one square bracket, one open square bracket and one closed square bracket. So this is the quickest way to know that it is a one dimensional array. Or whenever an object is created in Python, a method and attribute, some methods and attributes are get available to you. Methods are the operation that you can perform on the arrays. Methods क्या होते हैं? आपको किसी प्रकार का operations वगैरह करना है, so yeah, you use those methods to change the behavior or the feature of the objects. And attributes क्या होते हैं? जो आपने अभी ये object create किया है, array object create किया है, इसके फीचर्स को अगर पता करना है, एट्रीब्यूट ऑफ दोज क्रिएटेड
ऑब्जेक्ट आपको अगर पता करना है, सो पता करने के लिए आपके पास में वो एट्रीब्यूट्स होते हैं. सो इफ आई एम सेइंग लेट्स चेक द शेप ऑफ दिस एरे ऑब्जेक्ट. So shape will be your attribute because it tells you it is telling about the characteristics of this array, that it is a one dimensional array, and this is how a one dimensional array looks like. It's a single digit tuple, single element tuple, and this 3 actually tells you about how many elements are present in your array, or I should say this is the size of the array. So this is your one dimensional array. Whenever you see such type of shape of any array, it means it's a one dimensional array containing 3 elements. So this is the shape. Shape is a attribute or a feature of this numpy array object. You can we saw this was your 1D array. What about the 2D array? If you want to generate a 2D array, just what you will do is, let's say np dot I will create one more list, let's say L 1 comma 2 comma 3 and comma 4 comma 5 comma 6. This is your this is your list of list. A big list has two small list in it, right? So this is your first element of this big list, and this is your second element of this big list, right? So let's run this, and now I want to convert this L object, which is your list, to a array. So let's do that. Np dot array L. So what you saw here is you have converted a list of lists, or I should say nested list, to a array. And how many square brackets you are seeing here is are the square brackets are 2. So I can take a guess that it's a two dimensional array. So let's save this or assign this array to ARR, and let's check the shape of this ARR now. So it is a two dimensional array. So let's scroll up. So shape of a two dimensional array always look like this. The first thing tells you about how many rows are there in your two dimensional array. The second thing tells you about how many columns are there in your array. So in our case we have 2 rows and 3 columns. So it is a two dimensional array. Similarly, we can make a three dimensional array. Let's take one more list, 1 comma 2 comma 3, 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6, and let's close this bracket, comma 6 comma 7 comma 8 comma 9 comma 10 comma 11, right? So let's close this bracket also. Yeah, so this is your nested list. A big list has a small subset or small list of list. This is your first list of list, this is your second list of list. Now I want to convert this list to an array. So let's do that. So now you can see that you have created your very first three-dimensional array. Why I am calling this a three-dimensional array? Let's take a guess through the number of squares. So it has 3 squares. Now a three-dimensional array has channels, right? So this is your first channel, first element of the three-dimensional array, that is your first channel, and this is your second channel. ये आपका दूसरा channel है. So your three-dimensional array has two channels. This one is your first channel and this one is your second channel, and each channel are of how many rows? 2 rows and 3 columns. Each channel is consist of how many rows and how many columns? 2 rows and 3 columns. Let's check the shape of this array now. First let's assign this to ARR variable, and let's check the ARR dot shape of it. So
our ARR object, array object, has two channels, and each channel consists of two rows and three columns. And if anyone asks you what is the size of it, basically array का size मतलब कितने elements present है उस array के अंदर, that is your size of the array. So let's count this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, right? So I counted it. The easiest way to get the idea about the how many elements are there or the size of this array is, just multiply these three terms, 2 into 2 into 3, that is the 12. So your array consists of 12 elements, or the size of your array is 12. Okay, so this is how you can find the size of any array. In case of our 2D array, just multiply apply rows into columns. That is, in our earlier case it was 6. The size of our two dimensional array was 6. So this is how you get the size or the number of elements present in your array. So let's move further. You can convert even a tuple. Tuple also a sequence. Yeah. So using the np.array, you can also convert a tuple into an array, and this will be your one dimensional array. Or you can also check the type of it. You will get the answer as numpy.nd array. Now there are some built-in methods to generate arrays. Right now, what we are doing is we are first creating the list, then we are converting them to an array, right? But there are certain methods to generate arrays directly with certain features. ऐसा नहीं है अभी कैसा हो रहा था, हमारे पास में लिस्ट में हमारा अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ हम लोग नंबर्स लिख रहे थे, लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ पे पर्टिकुलर फीचर कंटेनिंग आपको एरेज जनरेट करने के लिए कुछ मेथड्स इनबिल्ट आती है numpy पैकेज के साथ में. दोज आर, आपको अगर एक एरे जनरेट करना है विथ 10 zeros, आपको एक एरे ऐसा जनरेट करना है जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे एंड ईच एलिमेंट विल बी zeros. सो आपके पास में आप क्या करोगे, देयर इज अ np डॉट zeros method available to you. You can auto complete it from, just there is a shortcut key on your keyboard. Just click the tab button and this documentation will open, or autocomplete options will be given to you. Zeros, let's say I am giving 5. So it आपको एक array generate होगा. वो एरे अभी कैसा है, इट्स अ वन डायमेंशनल एरे, और उसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है. एंड वो पांचों एलिमेंट्स कैसे हैं, एवरी एलिमेंट आर जीरोस. अब इसका डेटा टाइप जरा आप फोकस करना. लेट्स चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस. सो लेट्स टाइप डी टाइप ऑफ दिस. It is a float 64. So there was a decimal. So from that I got an idea that it will generate a float. The elements का data type क्या होगा, float 64 bit का. So let's do one more thing. So आपके पास में zeros आपने generate करे, एक array generate किया containing 5 zeros, और उसका shape कैसा होगा, let's check the shape of it right now. I can see that it is a one dimensional array containing 5 elements. आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप वन डायमेंशनल array generate करो. Let's do one more thing. Zeros. First check the documentation of it. Type shift tab from your keyboard and this nice documentation will be open to you. So it takes the shape. आपसे सिर्फ वो shape लेता है, किस टाइप का आपको array generate करना है वो आप यहाँ पे भेजते हो. Let's say 2 by 3, 2,3, that is 2 rows 3 column का आपको array generate करना है, 3 rows 2 columns का generate करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे shape भेजना है. So let's do that. 2,3. Yeah, we have to enclose, we have to send it as a tuple. Yeah, so you can see here we got a nice two-dimensional array, 2 rows and 3 columns, and each and every element of that array are array
0 point something, that it is a float 64 bit. अगेन नॉट यू कैन आप सिर्फ जीरोस नहीं बना सकते, आप वंस कंटेनिंग सारे एलिमेंट सब 1111 हो ऐसा भी एरे जनरेट कर सकते हो यूजिंग np.ones, लेट्स से 10। आपने एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स, और वो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, एवरी एलिमेंट इज वन। और इसका डेटा टाइप अगेन क्या निकलेगा, लेट्स चेक द डेटा टाइप ऑफ इट। द डेटा टाइप इज float 64। सो लेट्स मूव फर्दर। आपके पास में जिस तरह से आपने वंस बनाए, जीरोस बनाए, एक अरेंज मेथड होती है, क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर फ्रॉम, द क्वेश्चन इज वी हैव टू क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 50, राइट। 10 to 50, again we have to include this 50. There is a np dot arrange method. You have to just give the starting and stopping value, and it will automatically generate elements within the range from starting from 10 to 51, where 51, because it is a upper limit, it won't be included. Let's do that. Let's see what will happen here. P dot arrange method 10 comma 51. So let's see. So you have created a nice one dimensional array. This method will create by default a one dimensional array for you containing all those elements which you require, starting from this to this, where 51 is not included. Again, you can give, let's say you want to create an array containing all the even numbers, even integers. So just like the range function we saw in our Python track, we can give the steps to it. Let's say I want to generate array where the elements are taken from starting from 10 से लेके 51 तक, but each element should have a difference of 2 or steps of 2. So let's see, do that, comma 2. So you will get, we know that the even numbers are like 2 steps apart, right? So 10, then 12, then 14, then 16. All these numbers are the even numbers between 10 से लेके 51, where 59 is not included. ठीक है आपने, और ये कैसे हैं नंबर्स, इन अ फॉर्म ऑफ, ये जो आपको नंबर्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं, यूज इन अ फॉर्म ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे। तो आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो। नाउ लेट्स, हम लोगों ने लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग सीखा था, राइट। सो वी कैन यूज, व्हाट अबाउट इंडेक्सिंग इन अ थ्री डायमेंशनल एरे। आपके पास में इस तरह से एक नाइस थ्री डायमेंशनल एरे गिवन है। So let's take make our own three-dimensional array. ARR. We have this array here. So let's copy that. Copy this list. And let's convert it into an array. np dot array. This is your ARR. Let's take some more. This is your one. This is your two-dimensional array. Let's check the shape of it. Now, if I want to pull this 2 out, अगर मुझे इस 2 को ग्रैब करके बाहर निकालना है और आई शुड से इंडेक्स करना है, सो आप कैसे कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना इंडेक्सिंग अगेन यहाँ पे 0 1 2 3 होती है। सो आपका इसमें कितने एलिमेंट्स है, ये पहला रो, द फर्स्ट रो की पोजीशन क्या होगी 0, सेकेंड रो की पोजीशन क्या होगी 1। ये आप सबसे पहले इंडेक्सिंग करने के लिए आप एरे का नाम लिखते हो, देन राइट स्क्वायर ब्रैकेट आप टाइप करते हो, वहां पे पहले रो डिसाइड करते हो, वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से रो में है तो उस रो के बारे में लिखते हो, कॉमा, देन यू डिसाइड अबाउट द कॉलम, वो कौन से पर्टिकुलर कॉलम से बिलोंग करता है, कौन से पोजीशन वाले कॉलम से बिलोंग करता है। अगर वो थ्री डायमेंशनल एरे है, ये मेरा ARR, इफ
happens to be a 3 dimensional array, तो मुझे 3 चीजों के बारे में लिखना पड़ेगा। कौन से चैनल से बिलोंग करता है, कौन से नंबर के चैनल से, उस चैनल में कौन से रो से बिलोंग करता है, एंड उसमें कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। इस तरह से मुझे पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। सो लेट्स सी इन अवर केस हियर, आई वांट टू ग्रैब दिस 2 आउट। अभी 2 बेसिकली अगर 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करूं तो ये पहले रो का पार्ट है, पहले रो और दूसरे कॉलम का पार्ट है। हमेशा ध्यान रखना, आपको पाइथन के अंदर 0 से चालू होती है काउंटिंग, तो पहला रो अकॉर्डिंग टू अस, बट पाइथन के हिसाब से इस रो का पोजीशन क्या होगा, 0। सो ARR में से पोजीशन 0 वाले रो, 0th रो में कौन से कॉलम में, अगेन कॉलम 1 और 2 हमारे लिए वो सेकेंड कॉलम है, बट पाइथन के लिए 0 1 पोजीशन और इंडेक्स नंबर 1 कॉलम है, तो यहां से आप बताओगे 1, आप यहां से बाहर निकालोगे, सो यू विल गेट द 2 आउट। सिमिलरली एक आध क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम लोग। अगर इफ आई वांट टू ग्रैब दिस 6 आउट, ठीक है, इस एरे में से अगर मुझे 6 बाहर निकालना है, सो व्हाट विल आई हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे कौन से रो से बिलोंग करता है 6, हमारे लिए सेकेंड रो से बिलोंग करता है, बट अकॉर्डिंग टू द पाइथन इट बिलोंग्स टू द रो एट इंडेक्स 1, राइट। ये इंडेक्स 1 और ये इंडेक्स 0 की रो है, एंड उसमें कौन से कॉलम, कौन से पोजीशन, कौन से इंडेक्स से बिलोंग करता है, कौन से कॉलम के इंडेक्स से, 0 1 2, आप लिखोगे कॉमा 2। इस तरह से आप 6 पुल आउट करते हो। अभी तो हम सिंगल एलिमेंट निकाल रहे हैं। What if I told you to pull 2 and 3 out? अभी सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, अगेन सेम थिंग, जैसे हम लोगों ने इंडेक्सिंग, रेंज ऑफ वैल्यूज, सबसेट, लिस्ट में से एक छोटा सा सबसेट निकाला, जिसमें सपोज आपके पास में लिस्ट में 4 नंबर थे, उसमें से मैंने 2 नंबर आपको निकालने को बोले, सो वी यूज टू डू व्हाट, हम लोग उसमें रेंज यूज करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 1 से लेके पोजीशन 3 तक के एलिमेंट्स बाहर निकालो, वेर 3rd पोजीशन वाला आपका इंक्लूड नहीं होता था। सिमिलरली 2 और 3 आपको ग्रैब करना है। सो 2 और 3 कौन से रो से बिलोंग करते हैं, पोजीशन 0 से। एंड व्हाट अबाउट द कॉलम, 2 बिलोंग्स टू द कॉलम इंडेक्स 1 and 3 belongs to column index 2. So starting from column index 1 to column index 2, अगर मैं ऐसा लिखती हूं, so I will get only 2 out. Why? Because I know the rule of indexing. आप जब रेंज लिखते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 1 का जो कॉलम है एंड जो पोजीशन 2 का कॉलम है, वो एलिमेंट्स मुझे चाहिए, तो अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। एंड इफ आई वांट टू इंक्लूड इट, सो आई विल राइट 3, इवन दो यहाँ पे पोजीशन 3 का कोई कॉलम नहीं है, सो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 3 वैसे भी इंक्लूड होने वाला नहीं है। सो लेट्स रन दिस, नाउ यू विल गेट दैट 2 and 3 आउट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और देर इज वन मोर थिंग, आप इस तरह से उसको खाली भी छोड़ सकते हो, मतलब स्टार्टिंग, क्योंकि आपको कहाँ तक जाना है, 2 से लेके 3, मतलब आखिरी तक जाना है, पोजीशन 1 वाले कॉलम इंडेक्स से लेके आखिरी तक जाना है, बिकॉज 3 इज द एंड ऑफ द कॉलम, आखिरी वाले कॉलम का पार्ट है, तो यू कैन जस्ट लेट इट बी और आपको वहां तक मिल जाएगा। लेट्स सी 2 3 5 6 अगर मुझे पुल आउट करना है, तो कैसे करोगे आप, एरे में से 2 3 5 6, दीज टू, ये जो लोग हैं आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, 0th रो से एज वेल एज आपके इंडेक्स 1 वाले रो से, ये दोनों 0th इंडेक्स रो से बिलोंग करते हैं, ये दोनों इंडेक्स 1 से बिलोंग करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0th पोजिशन से लेके, अगेन बी वेरी केयरफुल, आप पोजीशन 2 इंडेक्स तक जाओगे, कॉमा, कॉलम के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे, 2 और 5 कौन से इंडेक्स कॉलम से आते हैं, 1, दैट इज आपका पहला कॉलम 0th पोजीशन में होगा, दूसरा कॉलम पहले पोजीशन पे होगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 3 तक,
तो आपको यहाँ पे 2 3 5 6 आप इस तरह से इंडेक्सिंग करते हो. सो फर्स्ट डिसाइड अबाउट द रोज एंड देन कॉमा डिसाइड अबाउट द कॉलम्स. व्हाट अबाउट दिस, अगर आपके पास में 3 डायमेंशनल एरे आया, so let's take 3 dimensional array. This is your 3 dimensional array. Yeah. So what if I told you to pull out 6, 7, 8? Now it is a 2 dimensional array. So first you have to decide कि ये 6, 7, 8 कौन से चैनल से बिलोंग करते हैं. तो ये आपका पहला चैनल है, बट अकॉर्डिंग टू पाइथन ये कौन सा चैनल है? 0th इंडेक्स वाला चैनल है. ये कौन सा चैनल है? हमारे लिए सेकेंड चैनल है, पर पाइथन के लिए पोजीशन 1 का इंडेक्स है. सो लेट्स से एरे में से 6, 7, 8 कौन से चैनल से बिलोंग करते हैं? पहले दूसरे चैनल से, पर पाइथन के लिए इंडेक्स 1 से बिलोंग करते हैं. सो इंडेक्स 1 पे जो बिलोंग करने वाला चैनल है उसमें कौन सी रो? 0th रो के कौन से एलिमेंट्स? सारे कॉलम के एलिमेंट्स 6, 7, 8. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके आखिरी तक, दैट इज 0, 1, 2. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 3. तो आपको यहाँ पे 6, 7, 8 इस तरह से मिलता है. सो फर्स्ट डिसाइड अबाउट द चैनल, देन डिसाइड अबाउट उस चैनल में कौन सी रो, देन डिसाइड अबाउट उस रो में कौन से कॉलम से वो बिलोंग करता है. सो दिस इज हाउ यू डू द re-indexing. Sorry, this is how you do the indexing thing. Now, what about the reshape? There is a reshape method. Now I'm calling reshape as a method. Why? Let's take one array again. Let's make a 2-dimensional array. ARR equals to np dot array. So this is your 2-dimensional array, right? It has 2 rows and 3 columns. I shape ARR dot shape. How many elements are there? 6 elements. I want to reshape it into a 1-dimensional array containing 1 row and 6 columns. So how I will do it? I have to do using reshape method. ARR dot reshape. आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करोगे, आपको यहाँ पे क्या सेंड करना पड़ता है? शेप सेंड करना पड़ता है. तो इस एरे को आपको कैसे में कन्वर्ट करना है? आपको 2-डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है कंटेनिंग 1 रो एंड 6 कॉलम्स. तो हाउ यू विल डू इट? आप सिर्फ यहाँ पे अपना शेप भेजोगे. सो आपका ये जो एरे बना है, इट इज अ 2-डायमेंशनल एरे, बट नाउ इट हैज 1 रो एंड 6 कॉलम. Similarly, what if I want to convert this 2-dimensional array to a 1-dimensional array containing 6 elements? So आपको अब अगर इसका शेप चेंज करना है इस तरह से 6 कॉमा, it will be a 1-dimensional array का शेप containing 6 elements. तो आप कैसे करोगे? ARR dot reshape, शेप यहाँ पे दोगे 6 comma. So now it is a 1-dimensional array. You can see here how many squares were there when you sent 1 row 6 column, 2 squares. It means 2 square bracket. It means still a 2-dimensional array containing 1 row and 6 columns. Now how many square brackets are there? Only 1. Or else you can even check the shape of it. It's a 1-dimensional array. So using the reshape method, you can reshape. Means what you are doing is, through method you are changing the behavior of your array. Again, it is not a permanent thing. आपका ये सिर्फ आपको व्यू देता है कि this is how your array will look like. ये आपका array इस तरह से दिखेगा. If you try to convert it into a 1 row and 6 column array, आपका array अभी भी intact है. आपका array अभी भी डैमेज नहीं हुआ. It is still 2 rows and 3 column array. अगर आपको परमानेंटली इसे चेंज करना है, तो ये जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आपको रीअसाइन करना पड़ेगा ARR में.
सो नाउ ये वाला एरे आपका फ्लश हो जाएगा, आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह ये जो आपने कन्वर्ट किया है ये एरे इस कंटेनर में जाके बैठ जाएगा। और एल्स अगर आपको अपना एरे इंटेक्ट रखना है, ये एरे को चेंज नहीं करना है, तो आप किसी एक वेरिएबल आपके पास में ये जो कन्वर्ट होके आया है इसको आपको फर्दर कभी आगे यूज में लेना है, सो व्हाट यू विल डू इट, आप इस तरह से न्यू एरे करके किसी वेरिएबल में इसको सेव कर दोगे, राइट। इसको रन करोगे, सो नाउ योर न्यू एरे विल बी लाइक दिस, इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे। तो आप इस तरह से रीशेप मेथड यूज कर सकते हो। अब रीशेप में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। अभी कैसा है, आप कभी भी कोई भी एरे को जब रीशेप करो, जस्ट मेक श्योर टू चेक इट्स शेप एंड देन कैलकुलेट इट्स साइज। आप पहले उसमें कितने साइज का वो आपका ओरिजिनली एरे है या उसमें ऑलरेडी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आपको ये चेक करना जरूरी है। सो व्हाट यू विल डू इट, आप कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 2 रोज एंड 3 कॉलम, दैट इज योर 6 एलिमेंट्स आर प्रेजेंटली देयर इन योर एरे, राइट। आपको इसको रीशेप करना है, तो रीशेप करने के लिए आप इस तरह से यहाँ पे शेप सेंड करते हो। मैंने अगर इसके अंदर 1,5 का टूपल भेजा, आई विल गेट अ वैल्यू एरर, बिकॉज 1,5 ये जो मैं एरे जनरेट करी हूँ कंटेनिंग 1 रो एंड 5 कॉलम, हाउ मेनी एलिमेंट्स ही इज एक्सपेक्टिंग, 1 into 5, that is only 5 elements, and how many elements I have are 6 element, that is 3 into 2, so एक एलिमेंट अभी भी आपके पास में एक्स्ट्रा है। तो आपने जो ये रीशेप करने की कोशिश कर रहे हो, ये रीशेप में जो शेप भेजा है इट्स रॉन्ग, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 6 into the shape of 1,5। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर जो आप रीशेप करते हो, यहाँ पे जो आप शेप सेंड कर रहे हो उसका साइज और जो ओरिजिनल एरे है उनका साइज मैच होना जरूरी है, और एल्स यू विल गेट एन वैल्यू एरर, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने एरेज क्रिएट किए कंटेनिंग ऑल जीरोज, एरे क्रिएट किया कंटेनिंग ऑल वंस, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होते हैं बेसिकली, ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सेम रोज एंड सेम कॉलम्स, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, दैट इज 5 रो 5 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम्स। इस तरह से सेम रो सेम कॉलम के जो एरेज होते हैं उसमें आपको जनरेट करना रहता है ऐसा एरे जिसके डायगोनल में सब 1 1 1 1 हो, उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, दैट इज 3 रो 3 कॉलम का साइज containing 1 in its diagonal, so आप np.i और बस यहाँ पे आप 3 भेजोगे, so ऑटोमेटिकली वो खुद को स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा, दैट इज आप सिर्फ 3 भेज रहे हो सिंगल डिजिट, बट आपको जो एरे मिलेगा वो कैसे शेप का मिलेगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड इन के डायगो इस आपको जो मिला है मैट्रिक्स, इसके डायगोनल को आप जब चेक करोगे, सो दीज डायगोनल विल हैव 1 इन इट। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में आपके 1 होते हैं, बाकी जगह अपर हाफ एंड लोअर हाफ में 0 होता है। अगर आपने np.i किया यहाँ पे लेट्स से 5 और 6, तो आपको 6 by 6 का मैट्रिक्स मिलता है, और उस मैट्रिक्स के डायगोनल में आपको यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 इस तरह से मिलता है। नाउ what will happen अगर मैंने np.i, let's see the documentation of it, आपसे वो एलिमेंट लेता है, राइट। what if आपने इस तरह से 3,4 भेजा, तो सबसे पहले आप इस तरह से टूपल नहीं भेज सकते हैं, आपको ये एरर देगा। सो लेट्स से 3,4, I want to make a matrix of 3 rows and 4 columns. Now I know it is not square matrix, जो आपके rows and column mismatch है,
फिर भी ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेगा? वो 3x3 का जो, अगर मैंने सिंपल ये वाला देखा, देखो ये पार्ट आप देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये पार्ट पहले ठीक है एक ज्यादा एलिमेंट है, मतलब 3 rows 3 कॉलम होना चाहिए थे, बट यू आर हैविंग 4 कॉलम्स, फाइन। 1 कॉलम में सिर्फ 0 रहेगा और 3x3 वाले मैट्रिक्स के अंदर उसके डायगोनल में आपको 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 5 है, सो वो 5 rows and 4 कॉलम्स का मैट्रिक्स तो जनरेट करेगा, बट 4x4 का जो पार्ट रहेगा, इतना पार्ट, उसके डायगोनल्स में आपको 1 मिलेगा। So it will generate an identity matrix with some features. Let's come to the second part. Use NumPy to generate a random number between 0 से 1. आपको 0 से 1 में देखा जाए तो there are infinite numbers we can generate, right? We can pull out between 0 से 1. Again, ये जो मेथड है np डॉट रैंडमली आपको 0 से 1 के बीच में एक सिंगल एलिमेंट बाहर निकालना है. सो दिस प्रोसेस इज रैंडम. तो out of all infinite numbers lying between 0 से 1 where 1 is not included, 1 के आने की probability is sure short is 0. आपको 1 कभी नहीं आएगा. इसी तरह से वो एक्चुअली उसका जो जिस तरह से ये रैंडम फंक्शन बना है, वो आपका कभी भी 1 लेके नहीं आएगा. एलिमेंट्स विल बी 0 से लेके 1, वेयर 0 के आने की प्रोबेबिलिटी इज समथिंग, 0 आएगा कभी ना कभी, बट 1 श्योरली कभी भी आपको आपका एज एन आउटपुट नहीं आएगा. सो आपको कैसे जनरेट करना है? एक सिंगल नंबर जनरेट करना है. सो np डॉट रैंडमली आपको पुल करना है नंबर लाइंग बिटवीन 0 से 1. सो आपको इस तरह से रैंडमली कोई भी एक नंबर वो जनरेट करके देता है. द थिंग इज टू ऑब्जर्व हियर इज, इसी इनपुट लाइन को अगर मैंने फिर से रन किया, एक और बार रन किया, यू कैन सी हियर ये जो आउटपुट है वो मेरा चेंज हो रहा है, बिकॉज इट्स अ रैंडम प्रोसेस. आप रैंडमली एक नंबर 0 से 1 के बीच में बिलोंग करने वाला निकाल रहे हो. सो इट्स अ रैंडम प्रोसेस. एवरी टाइम आई विल गेट अ डिफरेंट नंबर. सो इफ आई वांट टू फिक्स दैट नंबर, मुझे इसको फिक्स करना है सपोज, तो आप कैसे करोगे? यू हैव टू सेट अ सीड. np dot seed, let's say 22. It's basically np dot random dot seed. It's basically seed मतलब क्या? आप seed fix करने के बाद you can put any positive integer in the seed. आपने 22 डाला, 101 डाला, 51 डाला, it's up to you. But the thing is, जब आप सीड फिक्स करते हो लेट्स से 22, एंड जैसे ही फर्स्ट टाइम इसको रन करते हो, तो 22 के बिलोंगिंग ये जो रैंडम नंबर है ये फिक्स हो जाता है. सो लेट्स रन दिस सेल वन मोर टाइम. आपको हर बार वो 2.084 ही दिखेगा. सो नाउ यू हैव फिक्स्ड this number corresponding to this seed. If I change the seed, let's say 21, now the number will be changed. So let's change it again and change back to 22. Again you will get 0.2084. So आप इस तरह से values को fix करते हो using the seed. अगर आपको let's say बोला use a numpy array to generate array of 25 random numbers. वो रैंडम नंबर्स अब 0 से 1 के बीच में नहीं निकालने हैं आपको. 25 नंबर्स कैसे निकालने हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली इट्स अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेल शेप कर्व होता है, उसमें से आपको 25 नंबर्स यू हैव टू पुल आउट. तो आप क्या यूज करोगे? np डॉट रैंडम नंबर्स एंड 25 यहाँ पे आप लिखोगे, राइट? सो लेट्स डू दैट. डॉट रैंडमली कितने पुल करने हैं? 25 नंबर. और कहाँ से पुल करने हैं? नॉर्मल. सो डोंट फॉरगेट टू राइट n here 25. So you can see here you will get nice 25
randomly generated numbers or randomly pulled out numbers from the random normal distribution. Okay, so the distribution which has mean 0 and variance sigma square. It's a normal, standard normal distribution. Now let's say we want to generate an output looking like this. Just observe this output for a second. You can see here 0.001. It's a two-dimensional array. I can see the two squares open, square brackets opening. It's a two-dimensional array, and just observe this number. I can say the numbers were earlier 1 से लेके 100 तक, and I have divided each and every number 1 से लेके 100 तक with 100. मतलब आप पहले generate करोगे. Let's do this thing. np डॉट अरेंज मेथड यूज करके आपने 1 से लेके 101 तक, बिकॉज वी नीड 100, सो 101 तक आप अपर लिमिट फिक्स करोगे, आपने यहाँ नंबर जनरेट करे. सो यू गेट दिस वन डायमेंशनल एरे. नाउ व्हाट यू विल डू इज आप इसको 100 से डिवाइड करोगे. So you can see here after division you get this the values which are similar to what we were expecting, but there is still one more thing missing. This array is a two-dimensional array of shape 10 rows and 10 columns. So what you will do is we will reshape it. Let's do this. You will have to reshape it, and then now it's a two-dimensional array and will divide 100. Now very important thing to note here is any operation you are trying to divide each and every number with 100. numpy के अंदर कोई भी mathematical operation हुआ या logical operation हुआ, each and every operation are element wise. So ये 100 will be divided with by each and every, ये जो आपका operation है ये each and every element के साथ perform होगा. So every operation are performed on the numpy array are element wise. So let's do that. So आपका हर number से 100 divide हुआ है. Again let's see if I want to pull, let's save this array as ARR. What if I want to pull all those numbers which are basically greater than 0.45 out of this array? So I don't have to use some for loop and conditions. What I will do is, in my array, all those numbers which are greater than 0.45. Let's run this thing first. What you will get a two-dimensional array containing trues and false. Trues कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे ये condition satisfy करेगी. Now I will use this. This is known as filter array. The filter arrays are those which have trues and false. Trues कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे ये condition, उन positions पे मिलेगा जहाँ पे condition satisfy कर रही थी. So here. So I will use this array containing trues and false for indexing. So ARR, I will enclose this condition within the square bracket. So I want to pull all those values from this array who are satisfying this condition. So let's do that. So you will get all those numbers from this array who are satisfying this condition. So this is known as filtering of the arrays. There are certain more examples given in your study material. You can refer and do some practicing. There are certain rules written here about indexing. Again, you have to just make sure first check the shape of it. If it is a three-dimensional array and you want to pull certain numbers out of it, range of numbers, so first decide
where those number, in which channel those number belongs to, and then about the rows and then the columns. So these are some example you can refer. And now there are some methods again that come with your an array. जैसे ही आपका एक array object बनता है, there are certain methods that are available to you for your use. Let's make a two-dimensional array out of it. Let's take one example. Yeah, let's take this list and make an array out of it. Array equals to np dot array. It will be a two-dimensional array. ARR, yeah, it's a two-dimensional array. ARR dot shape. Now what you need to do is you get some methods available to you once an object and numpy.nd array object is created. How to check those methods? What are the methods available to you? There is a helping function dir, short for directory, gives you the all methods and attribute methods that you can perform, operation that you can perform on this array object. So this is the list of all the methods that you can perform. You can round the values inside the arrays, you can reshape it, we just saw. You can ravel means you will flat any n-dimensional array. We will just see in a second what this method stands for. You can find the maximum value, mean of that. First we will see the mean sum. These methods, what they will do, this is your array. Let's use the mean method over it. What it will do is आपके सारे जो भी नंबर्स थे इस एरे टू डायमेंशनल एरे में, उनका आपको मीन मिल जाता है यूजिंग दिस मीन मेथड. बट देयर इज अ कैच हियर. आपको एक्सेस पता थी कि हमारे पास में ऑपरेशन, ये भी तो ऑपरेशन है राइट. आप सभी नंबर्स का समेशन लेते हो और टोटल उनको डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स का आपने समेशन किया है वो आप काउंट से उसको डिवाइड करते हो. इस तरह से मीन निकालते हैं हम लोग. अब ये चीज आप परफॉर्म दो तरीके से भी कर सकते हो यूजिंग दैट एक्सेस राइट. सो लेट्स सी हमारा एरे कैसा था. व्हाट इफ मुझे सिर्फ पहले रो एंड दूसरे रो के एलिमेंट्स का ही मीन निकालना है, मतलब सिर्फ इन तीनों का मीन और इन तीनों का मीन, इस तरह से परफॉर्म करना है राइट. सो आई विल बी यूजिंग मीन मेथड, but inside that I will suggest axis 1. so आपको क्या मिलता है इस तरह से, सॉरी axis, yeah axis 1. so this is how you will get the answer. what about 0? तो आपको इस तरह से तीनों हम लोगों का एक एरे ऊपर हम लोग जनरेट कर लेते हैं. तो आपको क्या मिला, एक्सेस 0 मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का मीन, इन दोनों एलिमेंट्स का मीन, इन दोनों एलिमेंट्स का मीन. तो ये ऑपरेशन आपको किस एक्सेस के अलोंग परफॉर्म करना है? यू कैन ऑलवेज यूज दिस एक्सेस पैरामीटर and just assign 0 or 1 to it. Or if it's a three-dimensional array, then you can assign 2, 0, 1 and 2 to the axis parameter. ठीक है. Same all aggregating function, aggregating you want to find the sum of all the elements. by default it just summarize everything, आपको सारे एलिमेंट्स का समेशन दे देता है. बट व्हाट इफ आपको सिर्फ पहले रो और दूसरे रो का ही सम निकालना है. लेट्स से 3 plus 2 5, 5 plus 1 is 6 and let's say 6, 5 plus 6 is 11 and that is 15. इस तरह से आपको रो बाय रो हर एक एलिमेंट्स का समेशन निकालना है उन एलिमेंट्स का. सो आपको यहाँ पे एक्सेस आप मेंशन कर सकते हो. तो इस तरह से 5, 7, 9 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है. एक्सेस 0 मीन्स दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड एक्सेस 1 इज योर दिस होल रो एंड दिस होल. तो इस तरह से आपके जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है आपके पास में एक्सेस अवेलेबल रहती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है.
देन देर इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, आप किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो. देयर आर सो मेनी aggregating functions available which always have this access parameter within them. So आप उसका कैसे use कर सकते हो, it's up to your task की requirement कैसी है. So you can refer this study material to get to know, or you can use it as a practicing for the practicing purpose. So this is your first section, and we have dealt with the NumPy library which we have installed. Now in the second section we will